Hello everyone. Welcome back to my channel. Welcome again everyone. As per a viewer request, today I am here with a very important problems on application of trigonometry. So many people, many viewers have requested me to solve the problems on application of trigonometry. So I am here. आज मैं आप लोगों के साथ important problems on application of trigonometry सॉल्व करने वाली हूँ. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. So application of trigonometry questions you will get like around 5 marks, 3 marks 1 problem and 2 marks 1 problem. So let us start solving. This all problems which I am going to solve today is from previous year's question papers. So let us read the question. The angle of elevation of okay, as I comments before, let me tell you, in this application of trigonometry, you people have two conditions, that is angle of elevation and angle of depression. So you people are aware of what is angle of elevation and the angle of depression. So let us start. The angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Okay, don't confuse. 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. So first we know that here we have one tower. So let us draw one tower. I'll draw this tower and we know that there will be always ground level. This is the ground level. 30 meter, what they have told, the angle of elevation of top of the tower. Elevation always down to up. Elevation, it goes down to up. So the angle of elevation of top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, means from the point on the ground. This is the point on the ground. 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. The angle of elevation is what they are saying, 30 degree. Find the height of the tower. What we have to find? Height of the tower. So let us write any alphabet. It's of your choice. I'll write A, B, C. So here let us start solving. Here rough figure is very important. First you have to draw the figure so that you can understand the question well. So let us start solving now. We have to assume. We have assumed this, right? Let AB, हम लोग इसको assume किए हैं. Let AB be the height of the tower. Height of the tower. ओके, सो वी नीड टू फाइंड ए बी. हम लोगों को टावर का हाइट ही फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग. वी नो दैट इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म. ऑलवेज हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में ही सॉल्व करना है. सो नो अदर एंगल एक्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ट्राइंगल, दैट टू राइट एंगल ट्राइंगल. सो लेट अस सी हियर. हम लोग इसको tan थीटा पे रखेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी लेट अस टेक tan, कौन सी एंगल है, 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. हम लोगों को मालूम है tan थीटा जो है ऑपोजिट अपॉन opposite side upon adjacent side. So this side upon this side, L shape. Okay, so AB upon BC. तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि tan थीटा का मतलब opposite side upon adjacent side. You can even say that opposite upon base. Okay,
तो 1030 जो है 1/√3, इसकी भी वैल्यू आपको परफेक्ट होनी चाहिए। 1030 का मतलब 1/√3, इट शुड बी बाई हार्टेड, अंडरस्टूड, वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि 1030 की डिग्री जो है 1/√3 है। सो 1030 1/√3 बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टेबल which I have done here, let me show you. You know that this is the table. This is the table. We can see 1030 is nothing but 1/√3. You should by heart all this value to solve all application of trigonometry problem. Okay, 1030 is 1/√3 is equal to AB. We don't know which is height of the tower. हम लोगों को मालूम नहीं है. AB as it is we will write upon BC हम लोगों को दिया गया है 30. So cross multiply AB into √3, AB √3 is equal to 30. So AB is equal to 30 by √3, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड होगा. We know that if we have, हम लोग रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे. यहाँ पे रूट है तो रेशनलाइज करना पड़ता है. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर को बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करना है, विच यू हैव स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड क्लासेस प्रीवियस ईयर, हाउ टू रेशनलाइज. तो ए बी इज इक्वल टू 30√3, 30 को √3 से मल्टीप्लाई करना है. √3 इंटू √3 स्क्वायर. आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, सो आई विल कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट 30√3/3. हम लोगों को मालूम है 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30. सो ए बी इज इक्वल टू 10√3. Therefore the height of the tower is 10√3 मीटर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. सो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मी रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली so that first we have to read the question, then we have to draw the figure based on the question. Let me read. As observed from the top of 100-meter high lighthouse from the sea level. हम लोगों को वैसे भी मालूम है कि लाइट हाउस जो है सी लेवल के बेस पे रहता है. तो हम लोग ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि जो लाइट हाउस सी लेवल के इसमें एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100-meter हाई लाइट हाउस, यानी कि 100 मीटर हाई, यहाँ लाइट हाउस की हाइट बताई गई है. 100 मीटर हाई लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया गया है, मतलब टॉप ऑफ द लाइट हाउस. लाइट हाउस के ऊपर से ऑब्जर्व करने पर क्या मालूम होता है? लेट अस सी द एंगल ऑफ डिप्रेशन. मैंने बताया था कि जो हम लोग नीचे से ऊपर मतलब कि रोड से हिल को देखते हैं वो जो है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और हिल के ऊपर से रोड पे जब देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? टॉप ऑफ द लाइट हाउस से ये लोग शिप्स को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. सो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100-meter हाई लाइट हाउस. हम लोग एक लाइट हाउस ड्रॉ करेंगे. ये जो है लाइट हाउस है. ओके, 100-meter लाइट हाउस. ओके, तो ये सी लेवल है, सी लेवल लाइट हाउस है. तो सी लेवल ड्रॉ करेंगे क्योंकि लाइट हाउस का लेवल सी का है, तो मैंने सी लेवल ड्रॉ किया है. ओके, लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब टॉप टू ऊपर से देखा जा रहा है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. ओके, पहली शिप्स जो है 30 डिग्री है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट शिप एंड 2 ships बताएंगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे 45 डिग्री. ओके, 2 ships, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देखा गया है. फर्स्ट 30 डिग्री, सेकेंड जो है 45 डिग्री. ओके, 2 ships
If one of the ships is exactly behind, exactly behind, not other side, they are saying two ships are exactly behind each other. Okay, तो इधर साइड, टावर के इधर साइड बोलते तो एक शिप इधर हो जाता था. यहाँ पे एग्जैक्टली बिहाइंड अदर. ओके, तो ये एक शिप, ये बिहाइंड वाली शिप. ओके, सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. इन दो शिप्स का डिस्टेंस मालूम करना है. सो आई विल चेंज द कलर सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई हम लोगों को क्या फाइंड करना है. हम लोगों को इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है. टू शिप्स, distance between two ships. Okay, let us start finding. I'll write any name. Alphabet, it depends on you. Okay, हम लोगों को ये मालूम है कि which angle, adjacent angles are same. So if this is 30 degree, this is 30 degree, and if this is 45, this is 45 degree. Okay, डिप्रेशन में ऑलवेज ये एंगल यहाँ पे लिखना चाहिए. So let us start solving. Alphabet it depends on you. मैं लिखती हूँ यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D. So हम लोग लिखेंगे let AB be the 100 meter high lighthouse, क्योंकि ये दिया गया है 100 meter high lighthouse. C and D are the position of two ships. Two ships. CD be the distance. We know, we can see here C and D. That is CD be the distance between two ships. CD be the distance between two ships. Okay, now in triangle we can see, we should know always that we should see only right angle triangle. हम लोगों को सिर्फ right angle triangle देखना है. याद नहीं कि ABC देखना है. ACD we cannot take, only right angle triangle, as we all know that trigonometry completely based on right angle triangle. So in triangle, so I'll take this triangle ABC. In triangle ABC, angle B is 90 degree. We can see here ABC is a right angle triangle, and we know that tan theta in the sense tan 45, angle is theta over here, so tan 45 degree is equals to, we always know that tan means opposite upon adjacent. This is the angle opposite side is AB and upon adjacent is BC. So let us, we know that tan 45 is 1. See, this is the value we should be always known like in from the table. हम लोगों को टेबल में परफेक्ट होना चाहिए ये वैल्यूज मालूम होने के लिए. अगर हम लोगों को ये वैल्यूज मालूम नहीं है, we cannot solve the application of trigonometry problem. Is equal to AB is nothing but 100 upon BC. Therefore, BC into 1 is BC. BC is equals to 100 meter. Even BC हम लोगों को क्या मिला? 100 meter. Now, let us see in triangle. Which one triangle now we should take? हम लोगों को A, B and D. Big one triangle. A, B, D. In triangle A, B, D, again angle B is 90 degree. We know that it is right angle triangle. So, which is our angle theta now? Theta is 30 degree.
tan 30 degree is equal to theta opposite side is AB, opposite upon adjacent, complete full triangle na, so BD tan 30 is 1 upon root 3 is equal to AB 100 and BC BD, complete BD na, BD is nothing but BC plus CD, BC plus CD. So let us cross multiply this, BC plus CD into 1, BC plus CD is equal to 100 root 3. हम लोगों को ऑलरेडी BC की वैल्यू है, BC is equals to 100, so in place of BC I'll write 100 plus CD is equals to 100 root 3. CD is equal to 100 root 3 minus 100. What is common? 100 is common. CD is equal to 100 root 3 minus 1. क्योंकि 100 common लिया तो यहाँ क्या बचता है? root 3. And 100 if we have taken common, nothing means 1. Therefore, the distance between two ships are 100 root 3 minus 1 meter. This is the answer. Okay, let us go for next question. I'll solve next question now. Let us read out the question. Two windmills of height 50 meter and 40 meter are on either side of the field. In previous questions, ship was one other behind. They have told from on one side. Here, the two windmills are on either side of the field. A person observed the top of the windmill from a point in between the tower. The angle of elevation was found to be 45 degree in both cases. Find the distance between the two windmills. Okay, let us draw first two windmill. One is big and one is small. Okay, this is the field. Two windmills are standing over here like on either side of the field. One is this side, big one, I'll write 50 meter. And this one is bit small, that is 40 meter, two windmills. So, a person stand in between the windmills. The angle of elevation was found to be 45 degree. In both cases, means both side, a person observed the top of the windmill, that is angle of elevation, was found to be 45 degree in both cases. Okay. Find the distance between two windmill. This distance we need to find. Let us highlight that distance. I'll highlight that distance. Which distance we need to find? Two windmill distance. This distance we need to find. Okay, we can name any name. We can name it A, B, C, D and E. Okay, let us write. Let AB and CD be the two windmills and BC be the distance between two windmills. Okay, let us solve this now. We can see here we have two triangles, right angle triangle. Let us take one right angle triangle. In triangle ABE, tan 45 degree is equal to AB by opposite upon adjacent BE. Tan 45 is 1, value of tan 45 is 1, AB is 50 upon BE as it is. BE into 1 is BE, BE is equals to 50 meter. Okay.
Now let us take one more triangle. In triangle CDE, again same angle 1045 is equals to 45 this side, opposite is CD upon EC. 1045 is 1, CD is nothing but 40 by EC. EC into 1 is EC is equal to 40 meter. Therefore BC is the distance. BC is equals to BE plus, we can see BC is nothing but BE plus EC. BE plus EC, that is 50 plus 40 is equal to 90 meter. You can write therefore the distance between two windmills is 90 meter. Okay. Now the next question. Okay, the next question, very important question. Let us see. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Okay. इसका मतलब क्या है? 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. मतलब we will draw एक लड़का 1.5 meter tall boy is standing away or is standing at some distance of 30 meter tall building. ये जो है complete 30 meter tall building है. Let us draw the ground level. Okay. This is the ground level. This is the 1.5 meter tall boy. Okay. The angle of elevation from his eyes to the top of the building. मतलब उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. पहला वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री इंक्रीजेस टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. वो जैसे ही बिल्डिंग के टुवर्ड्स वॉक करता है एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस 30 degree to 60 degree. First it is 30 degree and it increases to 60 degree. Okay. So you understood, I guess, this figure. In this problems the very important concept is figure. First we have to read out the question, then we have to draw the figure. Okay. Now let us write name A, B, C, D, E. And we can write F. Okay. Now find the distance he walked towards the building. Our focus should be what to find. Find the distance he walked towards the building. So which is that distance? From here to here he walked towards the building. So this is the distance he walked. So what we have to find? AE we have to find. So let us start finding. Let AB be the height of boy and CD be the 30 meter high building. Okay. Now let us see. First thing is our triangle starts from this side. Right angle starts from here. Okay, this. But we don't have exactly DF value. We cannot see DF. What value is of DF? DF की क्या value है हम लोगों को मालूम नहीं है. But CD जो है building है and we know that 30 meter. तो हम लोग DF मालूम करने के लिए CD में से CF को निकालेंगे. Okay. To find the value of DF, we need to remove CF from CD. Okay. CD minus CF.
CD जो है 30 है, बट CF व्हाट वी डोंट नो, बट वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल. अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5. Okay, so 30 minus 1.5 is nothing but 28.5 meter. DF की वैल्यू क्या है? 28.5 meter. Let us start solving now. Let us take in triangle DADF or AFD. Big triangle let us take. In triangle AFD. Angle F is 90 degree, right? Tan which angle? Tan 30. What we need to take? Tan 30. Why? AFD I am taking. So tan 30 degree is equal to opposite 30. Opposite side is DF upon AF. Right? Okay. AF. Now tan 30 is 1 upon root 3 is equal to DF. DF is nothing but, now we have got, I will highlight 28.5 upon AF. AF into 1 is AF. 28 into root 3 is 28.5 root 3. Okay, this is AF value. Now let us see in triangle DFE. DFE. Tan 60 degree is equals to tan 60 degree is equals to DF upon EF. Okay, tan 60 is nothing but root 3. ये वैल्यू हम लोगों को मालूम रहना चाहिए. DF 28.5 upon EF. EF is equal to, EF इधर आता है, रूट 3 डिनोमिनेटर में जाता है, 28.5 अपॉन रूट 3. हम लोगों को मालूम है अगर यहाँ पे 3 आता है तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, रूट 3 इन अपॉन रूट 3. तो EF इज इक्वल्स टू 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर. Square and root get cancel. EF is equals to 28.5 root 3 upon 3. 3 ones are 3. 3 nines are 27. 0.35 are 50. तो EF की वैल्यू जो है 9.5 रूट 3. अभी हम लोगों को AE चाहिए, तो AF में से EF निकालेंगे तो AE मिलता है. सो देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू AF माइनस EF. AE इज इक्वल्स टू AF माइनस EF. AF क्या है? 28.5 रूट 3 माइनस EF जो है 9.5 रूट 3. सो हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे रफ वर्किंग कॉलम में. 28.5 माइनस 9.5, 5 माइनस 5 0 एंड 19 रूट 3. 19 रूट 3 मीटर. Therefore, the distance he walked towards the building is, therefore, the distance he walked towards the building is 19 root 3 meter. Okay, in my next video I am going to continue the again very important problems on application of trigonometry. So
to watch my next video. Don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.